So the first energy drainer was disrespectful students. But today, because Swati said, so we'll quickly deal with a noisy classroom first. Okay? So Jyoti, do you also suffer from this problem of a noisy classroom? No? Yes, okay. So let's start. So whenever I give you a problem is always a feedback to you that something is going wrong. बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है? या तो उसे भूख लगी है, या तो वो उस डिस्कम्फर्ट में है. तो मतलब प्रॉब्लम क्यों होती है? बिकॉज देयर इज अ फीडबैक which the person or the situation is telling you. So what needs to be worked on? What is the feedback which it is giving you? So can you think and tell me, why is a classroom noisy? Think about it for 30 seconds. Why is a classroom noisy? क्या reasons हो सकते हैं? Think like a student. Don't think like a teacher कि उनके पास काम नहीं है, फालतू बैठे हैं. ऐसा नहीं. As a student, you think, why is the classroom noisy? Yes, Jyoti? Because I think sometimes we bored with the subject, sometimes we were bored with the teachers also. Oh my God, this teacher is not, it's not going to teach very Boredom. good. Boredom is one reason. Boredom is one reason behind it. Because of Okay. that also, students are making noise, Okay. make class noise. Okay, great. So anything else? Mm, boredom, I thought. Swati, anything from you? Why do you think? Yes? Ma'am, in my class, what happens is whenever we distribute the pencils to children, they start checking the height. What is your height? What is your height? They fight with pencils because they are young, senior KG class. So one thing happens that, and even book distribution, what happens? We keep a pile of books in the center of the table, and they will read their names and they will take their books. So in that also, ये मेरा book है, ये मेरा book है. While taking pencils and books, it becomes a mess. Only during that That period. is one reason. Yes, otherwise, obviously during ma'am, when we give them toys to play like puzzles or any games, we have a PEL, play, explore and learn period, in which we give them different types of toys or any activity which they have to do. So even in that it happens like ये मेरा है मुझे दो शेयर टीचर ये शेयर नहीं कर रहा है टीचर ये मुझे नहीं दे रहा है मुझे कोई Complaints. खेलने नहीं दे रहा है Complaints. XYZ there are lots yes Correct. complaints Correct. so So this happens correct. Which means, Swati, I feel what you say is that they have a lot of high energy in them. Do you also feel, Jyoti? They have so much of energy that their energy is not getting utilized. So it's going somewhere else, isn't it? What do you think? They have high energy, they're very curious, they want to talk, they want to share secrets, they want to do something special, something more, which is not happening at that moment. So what's the feedback you're getting? अब आपको पता चल गया रूट कॉज क्या है. They have very high energy. They have very high energy. They want to share so much of things. They want to interact. So what is the feedback you're getting? How to tackle a noisy classroom? अगर कोई बहुत ज्यादा बात करता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो हम उसको कैसे चैनलाइज कर सकते हैं? I want you to think also. Yes, Jyoti. To neglect the students, sometimes what I did in my class, I'm taking tuitions. So one student in my class. So what he did, he's coming, he's talking, he's making disturbing others. So what I did, I just sometimes neglected. Whenever I told him, keep quiet, sit quietly, do your work, he is not listening in that mood at all. So at that time, I just leave it as it is. After some time, he just kept quiet and he will do his work. And he's coming to me and he's asking me, what will I do? So Okay. that way I will handle that child because that child is very, very high energy. He is not interested at all. He's sitting quiet. But sometimes I'm handling that way. Sometimes it is very frustrated also sometimes because whenever they have the exams to complete their all students studies and all. So that is the way I will handle the student. Okay, right now it's one student's behavior which you're talking about. Right now we are talking about a noisy classroom. So for example, you are teaching, but there's a lot of noise in the classroom because of high energy, because of a lot of curiosity. Okay, So so let's that's why
I did also when I was working with the schools. So that time what I did, I just keep quiet. I never 2 times, 3 times I said keep quiet, keep quiet, keep quiet. If they were not listening, I just sit quietly. I'm just watching them. One by one, slowly, they are, when they recognize that they realize that ki, yes, teacher is watching us, she is watching, she is observing. Automatically, they just keep quiet. I'm just giving them a look. Just they keep quiet. Immediately, after some, within 5-10 minutes, immediately the class will be uh, all keep quiet and they sit quietly and they are listening at that time. When we Okay. are, You need to be what quiet happened? and they mirror you. You be quiet and Right. they also become quiet, right? Okay. Yes, yes. Let's take Swati. Yes, Swati? Generally, ma'am, what we do, like we give the example of the child who is sitting nicely in the class. So I tell, see, look at this girl or boy, whoever it is. He's waiting for his turn. So we will generally praise them, like give a thumbs up or appreciation for that child. That see how he's waiting for the turn. So we have to all wait for our turn and share the toys or even with the pencil thing the same way. So automatically, yes, children calm down a bit. Okay, So right. that So you helps model the sometimes. behavior which should be there in the class, and then they see somebody doing Yes, it and they start doing that. yes, Follow the behavior, follow the good behavior. That's what yes, you do. Okay. So we have yes, one thing yes, yes. which Jyoti said, mirroring, and one thing which you said, which is modeling the correct behavior. Okay, right. So these are two things. When you feel that your class is noisy, you do that. But can I give you something which happens in seconds? Can I give you something which happens like this? Okay. So the Yes. most needed thing for you is an attention grabber. Now, what is an attention grabber? When you walk into the classroom, you feel that the kids are noisy. You should have something like a command. When you say that, the kids respond to it. You need to teach that. Okay. Attention grabber. You can write it down. Attention grabber. It grabs the attention. Now you can create your own attention grabber. How can you do that? Some examples, I'll show it to you. One example is you shout loudly, 1, 2, and the kids will be eyes on you. 1, 2, eyes on you. And then everybody's quiet in a second. Okay? So this is one attention grabber. Second attention grabber is when you say something like, Pilelo. I think I've told Swati before. No? No, okay. So, okay, right. So this is like this. Pilelo was a very famous artist. Okay, a very famous artist. Now he used to hide everywhere and draw some paintings. Okay. Now whenever Pilelo's mother used to call him, she will say, Pilelo. So Pilelo used to respond the same way as mother used to call. So mother will call, Pilelo. So Pilelo will respond, Ho, Pilelo, ho. Yeah. Pilelo, Pilelo, ho, ho, Pilelo. Pilelo, ho, like this, and everybody's quiet. So you are the mother, and who are Pilelos? All your students are Pilelos. Okay? Yes. So you need to Yes. Yes. teach them this. This is a procedure which you need to teach in your class. That see, we are building some procedures for our classroom, and whenever I say this, you all need to respond. And then you can give points if everybody listens to you. And you can give points to teams if everybody listens to you. Okay? So these are two attention grabbers. You can have your own attention grabbers. Like when I was working with a small class, I had an attention grabber where they loved to see engines, train engine. बच्चों को पसंद होता है खासकर. Okay, so we had this attention grabber. I will say chuk 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 chuk, and the kids will be coo coo chuk 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 coo coo like this. So you can become a tiger, you can become a dolphin. जो भी आपके क्लास को इंटरेस्ट करता है, you make an attention grabber on that. What is attention grabber? You are just speaking out a command, and immediately by listening to that command, your kids are stopping everything and they are responding. ठीक है? So follow attention grabber. It will definitely help you, Swati. Definitely it will help you. Okay? The second one, what you can do is, as you enter the class, you can start clapping. When the kids will listen to the clap, they feel, oh my God, something is happening, and suddenly somebody becomes quiet, the people who are talking.
suddenly. And the kids who love you will listen you first. They will Yes. always respond. And when they start responding, there will be loud sound. So everybody mums them out. Okay? One more thing I do is lock your mouth and give me the keys. Okay? You just tell them, lock your mouth, and now come on, throw the keys to me. And then every kid is like, they're locking and they're throwing the key to you. We are doing And, that. yeah, and if they speak in that period, you can quickly tell them, see, you don't have the keys. So how did you speak? You just tell them that. Okay, your mouth is still locked. And you can do the action. You don't have to speak that. You can do the action. Yeah, use lots of gestures also. Gestures also help. Okay, so try these 3 things. A noisy classroom is most often a feedback that a teacher doesn't follow rules which she has made. अगर आप रूल्स 100% फॉलो करोगे, 100% कोई नहीं करता, 99% फॉलो करोगे, तो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. अगर मैनेजमेंट प्लान ही नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी. ठीक है? जैसे जैसे आपका कनेक्शन बनता जाता है बच्चों के साथ, बच्चे आपको सुनना शुरू करते हैं क्योंकि कनेक्शन बन जाता है. डेटा ट्रांसफर तभी होता है ना जब कनेक्शन होता है, नहीं तो डेटा ट्रांसफर ब्रेक हो जाता है ना, फाइल एक्सेप्ट ही नहीं होती. करेक्ट? इसके लिए तो कनेक्शन बिल्ड होना बहुत जरूरी होता है. So somewhere down the line you can feel that अच्छा connection नहीं है, इसके लिए जरा. So I need to build more connection with my kids. Yes, yes. Okay? So noisy classroom, got it? Noisy classroom क्यों होता है और हम क्या कर सकते हैं noisy classroom के लिए? Only one thing, attention grabber. और ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा multiple times. ऐसा नहीं होगा एक ही बार में बच्चे सुनेंगे. आपको एक मिनी लेसन करना पड़ेगा. मिनी लेसन कैसे करते हैं? So you tell them that I've got something really exciting for all of us. Okay? And then you tell them there is a command and follow principle which we are going to do, जिससे कि हमारी पूरी क्लास एक बार में कंट्रोल हो जाएगी. So let's try this. तुम लोग बातें करो, and whenever I say this, you need to quickly, here and here you should not be, you should be looking at me and shout this out loud. Okay, and sit smartly. And then slowly and slowly when you use it, then they start responding and then you start building that. Okay, but डिस्क्लेमर विच आई वांट टू गिव यू, इसको ओवर यूज मत करना. ओवर यूज करोगे तो बच्चे बहुत यूज्ड टू हो जाएंगे एंड देन फिर वो सुनेंगे नहीं. किसी भी चीज को हम ओवर यूज जब करने लगते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है. ओके, नेवर ओवर यूज योर रूल्स. उनको बिल्कुल बैलेंस के साथ यूज करना रहता है. क्लियर? सो गॉट सम फीडबैक. एक और चीज मैं यूज करती हूँ, नॉइज मीटर. जैसे आप लोग चार्ट्स बनाते हैं ना टीम वगैरह के, तो आप एक नॉइज मीटर भी क्रिएट कर सकते हो. हाँ, लेट मी शो इट टू यू. या सी, इफ दिस इज माय बोर्ड, व्हाट आई डू, एट वन साइड मैं नॉर्मली अपना बोर्ड ऐसे करती हूँ कि यहाँ पे एजेंडा होता है एंड यहाँ पे डेज होते हैं, कितने डेज बचे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, ईयरली एग्जाम्स के लिए. यहाँ पे नॉइज मीटर होता है. ओके, सो दिस इज द नॉइज मीटर. ऐसे उसमें रहता है रेंज. यहाँ पे रेड होता है, यहाँ पे येलो होता है, यहाँ पे ग्रीन होता है. ओके, सो जब बच्चे नॉर्मल आवाज कर रहे हैं, यू कैन पुट द काउंटर ऑन ग्रीन. यू कैन पुट द काउंटर ऑन ग्रीन. ठीक है, बट जब तेज आवाज है, यू कैन जस्ट पॉइंट इट हियर एंड देन शो देम क्वाइटली बाय जस्ट लुकिंग एट द नॉइज मीटर. दे नो कि हमारी वॉइस नॉर्मल से ज्यादा है एंड दे सडनली स्टार्ट कीपिंग क्वाइट. So you don't have to shout, you don't have to lose your voice for bringing the kids in control. ठीक है, you don't have to lose your voice. किसी टीचर को अपनी आवाज नहीं खोनी है सिर्फ इस चीज के लिए. ये बहुत छोटी सी चीज है जो आप आसानी से कर सकते हो धीरे धीरे करके, और वो भी सीखेंगे आपसे जब उन्हें पता है कि हमारी टीचर शाउट नहीं करती. As a very strong rule that my teacher never shouts in the class. She never raises her voice. She has rules, she has procedures for everything. Right? हाँ, हम शाउट भी क्यों करते? क्योंकि हमको पता है वो हमसे छोटे हैं. क्या हम अपने घर वालों पे शाउट करते हैं कभी जब वो हमारी बात नहीं सुनते? नहीं करते. क्यों? क्योंकि हमें पता है वो, हाँ, हम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते. पर हम अपने बच्चों से क्यों ऐसे बात करते हैं? क्योंकि वो हमसे छोटे हैं. हम कर सकते हैं, हमें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. राइट? सो व्हेन वी नो सम रूल्स वी फॉलो देम, बट बच्चों के साथ वो फॉलो नहीं होगा. करेक्ट? हमारे खुद के बच्चों के साथ हम उन पे चिल्ला देते हैं, पर हम अपने मम्मी पापा पे, अपने सास ससुर पे कभी नहीं चिल्लाते. राइट? राइट? हाँ, मतलब जो हमसे पावर में छोटा होता है उसके सामने आवाज तेज होना बहुत नॉर्मल है और बहुत इजीली हम कर देते हैं बिना सोचे समझे. पर जो हमसे ज्यादा पावर में है,
हम उसके सामने आसानी से आवाज नहीं उठा पाते, भले ही वो ज्यादा रॉन्ग हो। ठीक है, तो छोटों को भी इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये एक प्रिंसिपल आप फॉलो कर सकते हो। ओके, दैट आई कैन नॉट रेज माई वॉइस इन फ्रंट ऑफ देम, right? So this is done, Swati. Do you feel that you have some things in hand? Yes. Jyoti, you also feel that you got some 2-3 things which you can follow? Yes. Okay. So let's start with the main thing which I wanted to start with you today, which is disrespectful students. Okay. Right. So I want you to take 2 minutes and start thinking कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ और जहां पे किसी बच्चे ने या किसी स्टूडेंट ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया। ओके, विथ स्मॉल किड्स इट्स वेरी अनलाइकली दैट दे डिसरिस्पेक्ट यू, बिकॉज बच्चों को खुद ही नहीं पता होता डिसरिस्पेक्ट क्या है, तो वो दूसरों की कैसे करेंगे। ओके, सो स्टिल उनके कोई बिहेवियर से आपको डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ हो, तो यू कैन राइट दैट वन। सेकेंड, if you do not have any disrespectful student, you can start thinking of a situation in your life where you felt disrespected by any member of the family or any other teacher or any principal, any colleague. Okay, so start thinking, have 30 seconds, and when you are done, show me a thumbs up. Or you can think of it as a misbehaved student. Need not be that they disrespected you, they are not behaving properly. Okay, like Jyoti narrated one incident, that was misbehavior. Yes, the way the kid was moving everywhere, that was misbehavior. Not listening to you is misbehavior. Okay, now can you share if you've written anything, if you feel comfortable? Yes, Jyoti. I have nowadays I'm facing so much this problem, disrespectful and misbehavior of the students, because so many students I have seen, if I'm saying something, they are saying something another things, they are not listening it properly. First thing, वो बोलेंगे आप क्या बोल रहे हो हमें नहीं मतलब they are rudely they are talking to me, and sometimes they are and this is happening with the 5th and 6th standard students, not with the smaller child. I have teaching I have students with the 1st to 6th standard students I am having. So 5th and 6th standard students, they are behaving like that way. So why I don't know. And suddenly I was feeling like that. I think last 1 month I was observing them. So they are just behaving like that. They are rudely they are talking. They are not like, no, I'm not doing this. I don't want to complete it. Oh, they said that Directly, I don't want to complete it. yes, I'm not completing it. आपने बोला आपने मैंने कर दिया, अभी एक बार कर दिया हो गया, अभी अभी नहीं करूंगी मतलब they are not listening it. That is the problem which I am facing. I'm talking with their parents also. What's the problem? Why they are behaving like this? So they said she is also not listening. And one girl is in my class, Ananya, and her mother said she is not listening to us also. She is also behaving like that way. I don't know. Maybe I thought because nowadays is 10 to 13, 14 is the teenage age. It's earlier nowadays. And because of that also students are so much of behavioral changes within their whole
body. Why suddenly they are talking very sweetly? Sometimes they are talking very rudely. I thought, what happened with them and how to tackle with them? That is, I have a question. Okay, great. The Thank big you. fifth and sixth standard onwards students. Got it. Got it. Got it. Okay, Jyoti. Yes, Swati, anything from you? Ma'am, currently I'm having two kids in my class. One child from day one itself, he is like not interested in writing. He never writes, and if I give him pencil and book, he throws away the pencil and book that I don't want to write. Initially, he was doing that. Initially, he was only crying April month, but after that, when he started coming from bus, he settled down and he was coming to class without that. Even in national anthem, we do national anthem in our classrooms, so he will never stand up for national anthem. Even if I pull him and take no, 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 and he starts crying. So that was happening for a few days. Now slowly he has improved, but in writing part, yes, he never listens and he wants to write in some other pages. He will not write on the page we tell him to do, and he will only do drawings in all his pages. All his books, he has only drawn different things. That is there, ma'am. And one child, ma'am, he is very hyper. He runs outside without asking my permission. He never takes permission for going for washroom. And he goes multiple times. Within 10 minutes, half an hour, he goes multiple times, teacher, washroom, washroom. Sometimes he asks, sometimes he doesn't ask. And even walking in a line, he will never walk in a line, he'll just run away. Like we have a pattern followed in our school. Like take lines are there, so children they follow the pattern. Each and every child follows, but he never follows the pattern. He will straight away run. Even while coming back from the washroom, he will run and come. And even in classroom, he never sits in one place. He always roams around and disturbs other children and what they are doing, and chit chat with friends, talking with them. All those things happen in class. Like he is like that. I don't know what. Like he is having so much of energy, so we have to drain his energy in some other. Like we have to give him work that do this work, help teacher. So in that way, I divert his energy and these things. So that happens a lot. Got it. Got it. Okay. So, see, I will teach you, the way we respond to things. I'll just come to that. But before that, while talking to both of you, I felt, so you both believe that students should listen to their teachers? Yes. Okay, so you feel Because that we did. students should listen to their teachers. Okay. Now, Hmm. do you also feel that teachers also have a duty? So it's the duty of the student. Should matlab duty ho gayi na students ki. Should listen. Can anybody of you tell me why should students listen to teachers? Why? Why should they listen? क्यों सुनना चाहिए? हाँ बोलो. Because we are giving them instructions, we are teaching them, so we also expect that So they what? should listen to us. So what you're giving them instructions? So what? Like we are teaching them. So what you're teaching them? No, we guide them. It's not that they should listen to us, but we are like a guiding to the children. So you feel, Swati, Like it's they your have to belief. learn something from us. It's your belief कि They have कोई अगर किसी से कुछ सीखता है तो उसे 100% उसकी बात माननी चाहिए. not 100%. We don't expect it every time they listen to us. That is not possible. तो आप कैसे चूज कर सकते हो कि वो कौन सी बात सुनेगा और कौन सी नहीं? How can you choose for them? How can you choose? Do you also, whatever your teacher We says, you cannot choose, ma'am. 100%? They are That's what. That's what. So how do you know कि ठीक है ये वाली बात नहीं मानी ठीक है पर ये वाली बात माननी चाहिए? How do you know that? How do you know? Only because you're a he teacher? doesn't listen to any. ठीक है Ma'am, हो we सकता used है to वो अपनी when मम्मी we were small, we used to be very scared Correct, Swati, you're of there. our teachers. You used to But do. he's You used to do, Swati, because scared. it's your belief. It's your belief. Yeah. आपका belief है. Strong belief है आपका कि student हो तो teacher की बात सुनो. अगर अच्छा स्टूडेंट बनना है तो 100% टीचर का बात सुनना है क्योंकि आपने अपने लाइफ में स्टूडेंट को वैसे ही देखा है बट नॉट नेसेसरी कि स्टूडेंट ऐसा ही हो.
आर यू गेटिंग इट? तो आपको क्यों Yes. बुरा लगता है जब वो आपकी Yes. नहीं सुनता? क्योंकि आपके बिलीफ पे कोई पत्थर मारता है. इट्स योर बिलीफ विच इज गेटिंग क्वेश्चनड. अगर कोई मम्मी से जोर से बात कर ले, हमें क्यों बुरा लगता है? क्योंकि हमने हमारी लाइफ भर पेरेंट्स की पूजा करी है. जो चीज हमारे अंदर एक सेट पैटर्न है, अगर उसको कोई तोड़ने की कोशिश करता है, हमें वो बुरा लगता है और हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वो डिसरिस्पेक्ट है. पर ऐसा नहीं होता है स्वाति. ओके, तो सबसे पहले तो हमें उस चीज से बाहर आना है कि स्टूडेंट डजंट नीड टू लिसन टू यू ऑल द टाइम. ही कैन चूज टू लिसन टू यू स्वाति. ही शुड नॉट, बट ही कैन चूज टू. Got it? Write it down. Should nahi, choose to. You can also choose to help him. It's not your duty to help him. You are under a duty from your principal which you are following. You have no duty towards them. The way that you are in the class, the way you are telling them, you are fulfilling your duty. पर अगर आप out of the way जाके किसी बच्चे को correction कर रहे हो, that's not your duty. Your duty is to complete the course. Whatever you're doing outside is your own mantra कि टीचर तो ऐसा होता है. करेक्ट? आपके रूल बुक में, प्रिंसिपल रूल बुक में, कॉन्डक्ट में कहीं नहीं लिखा कि आपको पूरे 25 बच्चों को चेंज करना है. एंड दे आर अग्रीइंग विद दैट ना. कोई फेल होता है, कोई पास होता है, किसी के कम नंबर आते हैं, किसी के ज्यादा नंबर आते हैं, राइट? तो हम कितना स्ट्रेस लेते हैं इतनी सी बातों का. तो छोटी सी बात है ना. करेक्ट? कितनी छोटी सी बात है, पर क्योंकि हमारे दिमाग में उसको इतना बड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि हम बचपन में ऐसे बने, हमें वो बड़ी लगने लगती है. ठीक है? तो जब हम चूज टू बोलते हैं, आई चूज टू वर्क ऑन दिस चाइल्ड, जब आप चूज करते हो तो आपके कंधों से वो बोझा उतर जाता है टीचर के शुड का, कि टीचर ऐसा होता है, टीचर की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, अगर कोई ऐसा कर दे तो टीचर की डिसरिस्पेक्ट हो जाती है. तो आप एकदम फ्री हो जाते हो. करेक्ट? करेक्ट, आप फ्री हो जाते हो. सो दैट्स वन थिंग विच वी ऑल शुड नो. वन थिंग. ओके, और अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, दिस इज, एंड हाँ, दूसरी बात, वो जो बच्चे आपके लाइफ में आए हैं ना, वो इसीलिए आए हैं कि आपके टीचर के बीइंग में एक पजल मिसिंग है, उसको फिट करने के लिए आपके अंदर. हर बच्चा जो आपके सामने चैलेंज है, इट इज देयर क्योंकि उसको टैकल करना आपको नहीं आता, और वो इसीलिए आपकी क्लास में है, ताकि आप वो तरीका सीख जाओ. ओके, तो अभी कोई ऐसा बच्चा मिले तो हम क्या करेंगे? अरे आजा 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 आजा, मैं तुझे सिखाऊंगी. या दैट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी. वी शुड फील हैप्पी कि तुम मेरी क्लास में हो, बिकॉज मैं तुमसे कुछ नया सीखने वाली हूँ. वरना हर बच्चा अगर सुनने लगेगा तो टीचर की लाइफ तो झिंगा लाला. राइट? है ना? वो नहीं होता. क्यों होता है नहीं है? क्योंकि हर टीचर एक सा नहीं होता. करेक्ट? आपकी ही क्लास में वो बच्चा क्यों है स्वाति? बिकॉज आपकी बीइंग में वो चीज मिसिंग है. आपको वही चीज सीख के आगे बढ़ना है, अपने आप को ग्रो करना है एज अ टीचर. अगर हर बच्चा आपकी बात सुनने लगेगा तो आपको बोरिंग लगने लगेगा दिन. सोचो एक दिन ऐसा, जिस दिन कोई भी बच्चे ने कोई भी गड़बड़ नहीं की, सारे दिन ऐसे ही बीतते जा रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ कहाँ आएगी? ओके, so problematic students are your growth areas. So what you should do balle balle when you see them. Not stress. No stress, only happiness, because yes, this is the child who is going to teach me how to become a better teacher this year. अगर मैंने इसको करेक्ट कर दिया, मतलब मेरी लाइफ सॉर्टेड है, मैं बेटर टीचर के पथ पर आगे बढ़ रही हूँ. राइट ज्योति? राइट स्वाति? तो हमें उसे उस तरीके से देखना है. ठीक है? नाउ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, उसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. नाम सुना है कभी? Yes, सुना I है? did. Yeah. हाँ. सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसमें क्या होता है कि एवरी ब्रेन इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. ओके, सो यू कैन एक्चुअली ड्रॉ अ फेस. एक आप फेस बना सकते हो. आई जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू ऑल. आप भी बना सकते हो. ओके, लाइक दिस इज अ फेस. ठीक है? नाउ कोई भी चीज जो आप रिपीट करते हो अपने लाइफ में, कि जैसे हमें सुबह उठ के ब्रश करना है ना, फिर नहाना है, फिर फ्रेश होना है या वट एवर, फिर मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो वो एक आपके दिमाग में एक पाथवे क्रिएट करता है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ब्रश करना है, फिर नहाना है, फिर रेडी होना है, फिर अपने टाइम पे ऑफिस जाना है, फिर क्लास में टीचर से बात करनी है. सो इट्स क्रिएटिंग अ पाथवे इन योर ब्रेन. ठीक है? नाउ व्हेन यू रिपीट इट 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, many times, it becomes a habit. Okay, it becomes a Ma'am, habit for can you you. show the board? Yeah, It's not seen, ma'am, the board. Yes, it's ma'am. creating a habit. मतलब एक काम को जब आप रिपीट करोगे 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 तो वो एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी.
ठीक है। तो मान लो आपके ब्रेन में है एक हैबिट कि जब कोई शाउट करता है आपके ऊपर या आपकी बात नहीं सुनता है तो मुझे ऐसे रिस्पॉन्स देना है। तो आप कैसे रिस्पॉन्स देते हो मुझे बताओ। अगर आपका ब्रदर आपकी बात नहीं सुने या सिस्टर आपकी बात नहीं सुने तो आप कैसे रिस्पॉन्स देते हो? सोचो। यस ज्योति, यू कैन अनम्यूट। I'm also responding the same way. I'm also यू ऑल्सो shouting. डोंट लिसन। ठीक है। तो Yes, आपके I'm ब्रेन also में not ज्योति, listening. आपके ब्रेन में ज्योति न्यूरल पाथवे है कि अगर कोई आपकी बात नहीं सुनेगा तो मैं भी तेरी बात नहीं सुनूंगी। दिस इज योर बॉडी। Mm. उसने पाथवे बना लिया है और आप यही फॉलो करते हो ज्योति अपनी लाइफ में। दिस इज योर हैबिट। ठीक है। तो जब भी आपकी लाइफ में अब आप सोचना शुरू करो, जब भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी है तो मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया है, एक ही पैटर्न होगा उसका। या Yes. किसी ने जब मेरी डिसरिस्पेक्ट की है तो उसका एक ही पैटर्न होगा। किसी ने जब मेरे से प्यार से बात की है तो उसका एक ही पैटर्न होगा। क्यों? क्योंकि आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हो सालों से। ठीक है। तो ये Yes. जो पाथवेज होते हैं ये आपके बिहेवियर को क्रिएट करते हैं। तो आपका बिहेवियर अलग है ज्योति क्योंकि आपने अलग चीजें देखी है लाइफ में। स्वाति का Yes. बिहेवियर अलग है क्योंकि उसने अलग चीजें देखी है लाइफ में। मेरा बिहेवियर अलग है क्योंकि मैंने अलग चीजें देखी हैं। अग्रीड? Mm. अग्रीड। Yes. ठीक है। Yeah. तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये न्यूरॉन्स है, ये एक लैंग्वेज क्रिएट करते हैं हमारे ब्रेन में जो हमारा ब्रेन समझता है। हर किसी की अलग होती है। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास एक आदमी आया क्लासरूम से, प्रिंसिपल के ऑफिस से, और उसने बोला ज्योति मैम प्रिंसिपल इज कॉलिंग यू। और स्वाति आपको भी बोला प्रिंसिपल इज कॉलिंग यू। ठीक है। ये एक्सटर्नल इवेंट आया आपके ब्रेन के अंदर। ठीक है। पर आपके ब्रेन में ना एक छलनी लगी रहती है। देयर इज अ फिल्टर इन योर ब्रेन। ठीक है। एनीथिंग विच हैपेंस व्हेन यू सी इट, दिस फिल्टर filters that. How does it Mm. filter? The way your brain has habits, it filters that. ठीक है। Mm. तो एग्जाम्पल स्वाति के लाइफ में ऐसे हुआ होगा, इसके पहले जितनी बार भी प्रिंसिपल ने बुलाया होगा कुछ अप्रिसिएशन के लिए बुलाया होगा कि स्वाति इज अ नाइस टीचर, लेट मी कॉल हर एंड आस्क फीडबैक फ्रॉम हर। तो स्वाति क्या सोचेगी, बिकॉज पहले ऐसा हुआ है तो स्वाति विल से ठीक है मुझे क्लास के बीच में से बुलाया, मतलब देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड टीचर शी नीड्स मी राइट नाउ। ठीक है। सो स्वाति विल गो। ज्योति, अगेन ज्योति इज अ डिफरेंट पर्सन। जैसा जैसा ज्योति का ब्रेन उसे ट्रेन करेगा, ज्योति विल बी लाइक अरे यार हमेशा ये मेरा टाइम वेस्ट कर लेती है, बुला लेती है बीच बीच में, मैं क्लास में पढ़ा ही नहीं पाती हूँ, व्हाट इज दिस। Mm. सो डिफरेंट रिएक्शन इज क्रिएटेड। ओके। सो Yes. सेम इवेंट but how does it land into different minds? Very differently. Correct. So same thing happens when a student misbehaves. तो आप दो लोगों के अंदर दो अलग तरीके के रिएक्शंस क्रिएट होंगे। कैसे होंगे? जैसे आपका बिलीफ है, तो ये जो बार बार होता रहता है इससे हमारे बिलीफ्स बनते हैं, वो बिलीफ्स हमें एक एक्शन करने पे मजबूर करते हैं। एंड दैट्स हाउ द प्रोग्राम ऑफ आवर ब्रेन इज डिसाइडेड, द लैंग्वेज ऑफ आवर ब्रेन इज डिसाइडेड। बट द गुड थिंग इज यू कैन चेंज दिस लैंग्वेज। हाउ कैन यू चेंज दिस लैंग्वेज? बाय डूइंग समथिंग न्यू, बाय रिस्पॉन्डिंग इन अ न्यू मैनर। ठीक है। आप सोचो कि ठीक है पहले जो स्वाति है वो ये सोचती रहेगी और ऐसे रिस्पॉन्ड करती रहेगी, आज मैं एक डिफरेंट रिस्पॉन्स ट्राई करूंगी। ओके। तो नॉर्मली ज्योति कोई मिसबिहेव करेगा तो नॉर्मल ज्योति का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, बट लेट मी ट्राई समथिंग न्यू नाउ, बिकॉज मैं एक महीने से तो फेस कर ही रही हूँ ये इशू। सो आई नीड टू डू समथिंग न्यू सो दैट आई गेट समथिंग न्यू। ठीक है ना। एक ही रेसिपी को एक ही तरीके से बनाएंगे तो वही रेसिपी बनेगी ना। जब उसके इंग्रेडिएंट्स को बदलेंगे तब जाके न्यू रेसिपीज क्रिएट होंगी। करेक्ट? अग्रीड? ओके। सो नाउ व्हाट विल यू डू? द फर्स्ट थिंग इज, जो आपको सोचना है अपने अंदर कि मेरे अंदर एक नॉर्मल सेल्फ जो मेरा इतने सालों से चलता आ रहा है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है इन चीजों के लिए, आपको समझना है, बिकॉज उस पे काम करेंगे पहले। एक नॉर्मल सेल्फ आपका ज्योति स्वामी कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब कोई ऐसे बिहेव करता है, स्वाति सोनी कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब क्लास में स्टूडेंट ये बोलता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके, गेटिंग इट? या थोड़ा हैवी हो रहा है? नहीं, getting. Getting it? Swati, are you getting it? Yes. Ma'am, but how to handle him? That's what Really we are coming to, difficult. Swati. Swati is totally No, oriented what happens, ma'am, towards even if, बोलो. ma'am, what happens even if we are teaching something,
Like suppose blending, at bat or whatever. So he will start saying it loudly, or he will say something else, and he will say blah blah blah. Which his voice also is louder than me. So even while reciting the numbers, or we are reciting the numbers 1 to 100, so he will be in his own word and he will say the different numbers. So the whole class gets distracted because of only his voice is different. Okay, So there are right. lots of such things that which happens even while teaching. Correct. So Swati, then this means that he needs to be taught how to behave. Okay. So I'm coming to 3 solutions. I'm going to tell you what you need to do in these cases. Okay. So the first thing is you have to tell yourself, okay, I don't know how to change you. You can write it down if you want. I don't know how to change you, but I can change my expectations from you. I cannot change you. Okay. But I can change my expectations from you. Now, your expectation is that he starts behaving normally as other kids. Correct? That's your expectation. How Yes. can you minimize this expectation? उसको minimize कैसे कर सकते हो? ये सोचो कि आप उससे least expectation क्या कर सकते हो? इसके बारे में सोचो. ऐसा कर सकते हैं कि when you are training the other kids, you have a separate work for him to be done, in which he is engaged. Because you can see and you have seen he cannot be taught with the regular kids. Can you have some activity for him when you are engaging others so that he doesn't speak with others? This is one thing which you can have. You can have a separate folder for these kind of kids. Okay? One. Second thing is you need to teach them to acknowledge your own emotions and how to tackle them. Like when he starts shouting, you can just ask him quietly and privately, what do you feel when you shout? Can you be little softer so that other kids don't get disturbed? And then you can just share with him how to be less louder. So बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे इंस्ट्रक्शंस बहुत ही कॉमन होते हैं, इतने कॉमन होते हैं कि बच्चे उसके अंदर से सेंस नहीं निकाल पाते. हमें समझ में आता है क्योंकि हमें सुन के समझ में आता है, बट बच्चों को वो अलग तरीके से अपील करते हैं. लेस लाउडर में कभी वो बोल रहा होगा ए बी, लेस लाउडर होगा ए बी, फिर भी वो दूसरों से लाउडर होगा. Okay, so maybe you can tell them that when we respond together, our voice should be one. उसको example दो इसका. So let's practice with, maybe his name is Atharv. So let's practice with Atharv कि common voice कैसे निकालते हैं. So you can have a mini lesson on that, Swati. Chalo, now everybody start shouting A. Now Atharv, you sit in the middle and match your voice with the class. Show it to him कि voice कैसे match होती है. Okay? So whenever a kid is not able to understand your instructions, आपके पास क्या feedback है? वो follow नहीं कर रहा है instructions, मतलब आपको instructions को और simplify करना है. ठीक है, उधर जाके खाना खा लो, को simplify. Please get up from your seat, take out your lunch box, carry it quietly towards the last bench, keep it on the bench, sit down on the bench, and now start opening your tiffin and then start eating. इतना detailed instruction होना चाहिए, so that a kid who has no brain can also follow. Okay, it makes your work easier. ठीक है, so पहला काम तभी करना है कि instructions को easy करना है. Instructions easy करने के बाद भी challenge आ रहा हो तो उनको और easy करना है. So it's only about making the task simpler and simpler and simpler. ठीक है, can you try this next time, Swati, now? Yes, ma'am. But yes, definitely I try. And ma'am, what about the running thing? Running thing, can you tell me one more time? How to manage that? Like I told you, ma'am, whenever we are going for a washroom, hand wash, and if we don't also, he will just run out of the class and go. He'll just take a round, run in the corridor, come back, like that. He does that things just to drain his energy. He will be running in the corridors. So think about it. Not once or twice, multiple times. So you think about it, that he's showing you again and again that he has so much and you are not using it. So you need to think of activities of running in the class. Maybe, come on, Atharv, go and grab the duster for me.
Come on, Atharv, go and grab the bottle for me. Maybe you can make him the in charge for taking up things in your class for you. So That all I'm the doing, running, ma'am. so use that. So you can tell him to grab notebook That from one I'm class doing. to another class. Yes, that's what, ma'am. Whenever we have the home play books, we tell the children to keep it on the table, center of the table. So it is his duty that he has to collect the books from all the tables and keep on the shelves. So he does that So I've beautifully. given that duty for him. He does He that does, beautifully. but yes, ma'am, sometimes he does. Sometimes he does. It depends on his mood, ma'am. If he's in a good mood, he will do it. If not, then he will not do that way. It is not constant, ma'am. His behavior is not constant. Sometimes it's very nice to listen, but sometimes what happens, he will be like, expressing, like he has to drain off his energy somewhere, and he will be talking with others, chatting, doing speak, all that things happens. Okay, so do you have rules for him? No, ma'am. See, rules are common for all. It is not that I have a special rule for him. You can have that because Like see, he's special. whatever. He's showing it to you again and again that he's acting differently. He's unique, and his uniqueness needs to be awarded. Because हम में से कितनों के पास इतना ब्रेवरी होता है कि क्लास में टीचर के अगेंस्ट जाके कुछ भी बोलते हैं. That's bravery. मतलब वो एक लीग से अलग बच्चा है. ज्योति, for you also, जो मुझे आपको उस बच्चे के बारे में बताना जिसने बोला ना, I'm not doing this. I've done it once and now I'm not doing it. So imagine you in your class saying like that. Do you have that much of power when you were young? No. So that is so much of power they have. Use it. Use it. Okay, now you as a teacher need to think. मैं हर चीज आपको नहीं बता पाऊंगी. I cannot spoon Yes. feed. Right? So आपको अपने situations के accordingly चीजें use करनी पड़ेंगी. So Jyoti needs to think. Jyoti needs to reward her. Okay, you have so much of uniqueness because you have so much of power. You are so brave. But can you channelize it for good things? Can you help others with your bravery? Because this bravery is not serving you, right? Somewhere Jyoti needs to show that girl or boy that ये जो bravery आप class में कर रहे हो, this is a rewarding for you right now. But ये आपको help नहीं कर रहा है. आप इसको किस तरीके से चैनलाइज कर सकते हो दूसरों की हेल्प करने के लिए? ज्योति, आपको उसे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे. हाउ कैन शी हेल्प अदर्स यूजिंग दिस ब्रेव? शी कैन बिकम द मॉनिटर, शी कैन बिकम द वॉइस मॉनिटर ऑफ द क्लास, शी कैन टॉक टू किड्स हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल एंड देन टेल देयर प्रॉब्लम्स टू यू. वो वॉइस बन सकती है सबकी. Okay, like a speaker of the class. So give her that responsibility. आपको आपके क्लास के बच्चों के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होने से ये चीजें आप कर सकते हो बहुत स्मूथली. She can be the person who go out in every classroom and tells the teacher, communicates, becomes the messenger because she's so confident. Yes, so use that. You polish her. Okay, diamonds भी तो ऐसे ही होते हैं ना, उनको पॉलिश करना पड़ता है तब जाके वो डायमंड्स जैसे शाइन करते हैं. They are that. वो अंदर होते हैं वैसे, but you have to polish it and make it shine. Right? Yes? Right. So एक चीज हो गई ये. Second is what I want to tell you. Whenever a kid disrespects या misbehaves, they are in low energy. You understand that now? ये उनका character है, उनका response है. Is it about you? Is it about अगर कोई हमारे साथ misbehave करता है, is it about you or is it about them? Then Obviously, it's about them because you have no control over them, right? It's about them. अगर आपका family member आपके साथ misbehave करता है तो आपके अंदर थोड़ी ना कोई problem है, उस family member में problem है ना. yes, right? तो हम क्या उनके साथ उनकी लो एनर्जी को मैच करने लगेंगे? No. What are we going to do? We are going to take our energy in our hands and we are going to stay calm and composed. And you can tell her, what's her name? Jyoti, what's her name, that girl? Ananya. Yeah. So Ananya, I hear you. I think you are in some other mode. Let us talk after class about this. So you are not going to have that power struggle. मैं क्लास की लीडर हूं, अभी तुझे बताती हूँ. And she will say, तुम क्या लीडर हो, मैं तुमको बताऊंगी स्टूडेंट कैसे मिसबिहेव करते हैं, अभी बताती हूँ. Because it should not be a power struggle between you and the student कि क्लास का लीडर कौन. ऐसा नहीं दिखाई देना चाहिए ना, because your should is very strong ना, स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए, टीचर गाइड होता है, टीचर जो बोलेगा वही करेक्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं होता.
बिल्कुल भी नहीं होता। तो हर बार जब भी हम कोशिश करते हैं ये प्रूव करने की कि हम सही हैं, दैट मीन्स इट वी आर स्पीकिंग फ्रॉम आवर ईगो, हमारा ईगो बोल रहा है वो, ठीक है। जबकि क्या है, उसको जितना पता है वो राइट है उसके सेंस में, मैं दोबारा नहीं करूंगी यार, मैं बहुत मेहनत कर चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं कर सकती, शी इज टेलिंग यू दैट, वो राइट है ना उसके सेंस में, आप राइट हो अपने सेंस में, बिकॉज यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीटिंग अ वर्क, सो बोथ ऑफ यू आर राइट, ओनली थिंग इज वो यहां से देख रही है, आप यहां से देख रहे हो, there's a wall, there's a wall, that's why, okay, both of you have that filter, वो ये फिल्टर है जो मैंने अभी बना के दिखाया था, उसकी बातें ऐसे आ रही है, आपकी बातें यहां से आ रही है, okay. So what you're going to do, you are going to step into your power, say Ananya, but you are going to tell yourself that I'm calm, जितना भी आसपास सुनामी हो रहा है आई एम काम, बिकॉज सबसे पहले यही होता है, हम रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं, रिएक्टिव मोड पता है ना, पता है रिएक्टिव मोड क्या होता है, एक जैसे छत्ता होता है बी का, उसमें किसी ने हाथ डाला तो क्या होता है, जू बीज पूरा, ऐसा रिएक्टिव मोड होता है। सो व्हेनेवर समबडी टचेस आवर बिलीफ, स्टूडेंट नहीं सुनता टीचर की बातें, तड़ाक बूम हो जाता है हमारे अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस वक्त हमें बताना है कि हम रिएक्टिव मोड में नहीं है, हम अपने क्रिएटिव मोड में हैं, बिकॉज रिएक्टिव मोड में सोल्यूशंस नहीं आते हैं, रिएक्टिव मोड में हम उसे सिर्फ ये बताते हैं कि हम सही हैं किसी भी स्टेक पे, किसी भी सूरत में, ठीक है। तो हम हमारे क्रिएटिव मोड में रहेंगे, तभी हम उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको पता है कि आप रिएक्टिव मोड में हो, यू आर इन अ मोड विच यू आर नॉट प्राउड ऑफ, टेल मी फास्ट, राइट और रॉन्ग, यू आर नॉट प्राउड ऑफ योर रिएक्टिव मोड, यस, करेक्ट। किसको किसको प्राउड है कि मैं गुस्सा होती तो मैं बहुत सुंदर लगती हूँ, किसको प्राउड होता है, किसी को नहीं होता। मैं जब किसी की बुराई करती हूँ तो मैं इतनी प्यारी लगती हूँ, किसी को भी नहीं होता, मुझे नहीं होता, कभी मैं किसी की बुराई करती हूँ, किसी की चुगली करती हूँ तो मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, नो, बिकॉज दैट्स माई रिएक्टिव मोड, आई एम रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन। But I love myself when I'm creating a lesson plan, because in my creative sense, I love myself when my kids get 100 out of 100, because I'm in my creative mode, correct? You all love yourself in your creative mode, correct? Yes. So yes, Jyoti, you want to share something? Yes, was the problem with me. What I wanted that every children, every student should get good marks in their exams, and they have to do the best. I am Should बोला focused आपने, on should, जब भी आप yes, शुड बोलो आप समझ लो ये आपका बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि आप yes, ऐसे ही yes. बड़े हो कि आपने बड़े बच्चों को होते यही देखा है कि उनके 100 मार्क्स आएंगे तभी वो अच्छे बनेंगे। नहीं नहीं अच्छे नहीं, बट आई सेड अगर आपके 2 मार्क्स भी अगर लास्ट एग्जाम से बढ़ते तो दैट इज यू आर प्रोग्रेसिंग, तो ग्रोथ होना दैट इज इम्पोर्टेंट. I am believing on growth. I'm not believing on the 100 out of. I said no. I बट यू don't आर want the 100. बिलीविंग, बट यू आर बिलीविंग कि ग्रोथ सिर्फ मार्क्स ही दिखा सकते हैं, कोई और चीज नहीं होती ग्रोथ दिखाने की, Okay, बिलीफ, because what happened, हमने जो इतने बचपन से हमने वही देखा है, वही सीखा है, and that's why we are in that. Yes, completely true. सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, अब मुझे कुछ Yes, बोलने की जरूरत नहीं है, ओके। सो नहीं व्हेनेवर नहीं यू आर नहीं. सेइंग दैट, आस्क योरसेल्फ, ये कोई फैक्ट है या ये कोई स्टोरी है जो मैंने अपने आप को सुनाती जा रही हूँ इतनी दुनिया से, इतनी सालों से मेरे अंदर ये स्टोरी चल रही है, पर ये फैक्ट नहीं है, ये मेरे खुद की बिलीफ सिस्टम है, इट्स योर बिलीफ सिस्टम ज्योति, कि ग्रोथ इज इक्वल टू मार्क्स, मोर ग्रोथ, मोर मार्क्स मोर ग्रोथ। बट वॉज द प्रॉब्लम, जितने भी पेरेंट्स हैं उनको क्या है कि दे आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दैट, ये क्या चल रहा है, बच्चे का क्या बेस्ट चल रहा है, क्या ये नहीं, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द मार्क्स. आई ऑलवेज टोल्ड देम दैट कि प्लीज थिंक अबाउट द उनकी जो ग्रोथ हो रही है, अगर भले ही 1 मार्क से हो रही है, 2 मार्क्स से पहले से बेटर है, तो प्लीज गो विद दैट फ्लो. दे आर नॉट थिंकिंग लाइक नहीं नहीं नहीं, लास्ट टाइम अच्छे मार्क्स आए थे, अभी तो कम आ गए, व्हाट वी So हैव टू listen डू. to me. I'll cut you down, Jyoti. I'll cut you down. See, do you believe किसी भी चीज में जब हम फोकस करते हैं, उस पर काम करते हैं, हमें रिजल्ट्स दिखते हैं? Yes. So the answer to that question when parents tell you is, sir, I know last time your child worked more harder. This time I think they lost some focus और उनके energy और effort थोड़े कम हुए होंगे, and that's why the score is lesser. Next time she can make it up.
This is not the final score of her life. Yeah. Is it the final score? No. One more thing I'm telling them, nobody's going to ask how many marks they are getting in fifth standard, fourth standard, third standard. It is not necessary. ये जरूरत ही नहीं ना, एंड ना ही कोई पूछता है ज्योति इन ज्योति सुनो, अब मैं आपको इसका परम सत्य बता रही हूँ, क्योंकि आप मार्क्स पे इतना इंपॉर्टेंस फोकस करते हो, तो आपके पेरेंट्स भी आपको ऐसे मिलेंगे जो मार्क्स पे फोकस करते हैं. यू अट्रैक्ट पीपल हु मेक यू ग्रो. आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो आपके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का भी वैसे ही बिलीफ सिस्टम आपके ऊपर आ रहा है. अब आपके ऊपर है आप उस बिलीफ सिस्टम को कैसे क्रैक करोगे. राइट? क्योंकि आपका भी यही बिलीफ सिस्टम है, कहीं ना कहीं आप बिलीव कर रहे हो, और जब वो बिलीव पूरा नहीं हो रहा है तो वही क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं. ठीक है, अब आप इसको नया न्यूरल पाथवे कैसे बना सकते हो, आपको पैटर्न समझ में आ गया, उसे ब्रेक करो. हाउ कैन यू शो ग्रोथ इन अदर एरियाज ऑफ द स्टूडेंट? Try focusing on that. Try focusing on debates in your class. Try focusing on singing things. Try focusing on different things in which your student has shown growth to you, so that you can point it out to the student, to the parents. And when you start putting focus on that, parents will also start focusing on that. And you know, Jyoti, when a kid grows in one area, they grow in all areas. आप यहाँ पे आए हो, अगर आपको थोड़ी सी भी ग्रोथ यहाँ पे फील होगी ना, आपको आपके और वर्टिकल्स में भी ये ग्रोथ फील होगी. बिलीव मी. Wherever you go, you will get to see it, and your kids will also. Kids are just a reflection of you. जैसे ही आप उस दूसरी ग्रोथ को भी वैल्यू करने लगोगे, your parents will also start valuing that growth which you have brought in the students. Apart from marks, you can make a simple report card, a short note on every student in which they have benefited. Physical growth, mental growth, speaking growth, language growth, confidence growth, whatever you can name it. Start telling them. ठीक है? Start telling them all of this. धीरे धीरे करके, क्योंकि देखो आप धीरे से चेंज हो गए, that waves will keep on coming. That waves will keep on coming, and then slowly and slowly जो पुराने waves थे वो चले जाएंगे. ठीक है? Yes? Okay. So one is using a calm tone. One, that is your prime हथियार, अस्त्र शस्त्र, being calm. ठीक है? So when you will say, why are you talking to the kid will also respond like that. They will mirror you. They will mirror you. लड़ाइयों में भी ऐसे होता है ना, एक अपनी आवाज यहाँ ले जाता है, दूसरा यहाँ ले जाता है, फिर वो यहाँ ले जाता है, फिर वो, तो it goes higher and higher. And the opposite also holds true. एक इतनी जोर से बात कर रहा है, दूसरा बोलेगा yes I can hear you, can you repeat what you said? Then suddenly यहाँ से धीरे हो जाती है वॉइस. उल्टा भी उसका सही होता है. So you can also try that in your class. When a kid is raising your voice, you can start reducing your voice so that they start mirroring you. हर किसी के साथ होता है. कोई आपसे जोर से सवाल पूछता है तो आप जोर से ही जवाब देते. ऐसा नहीं होता कि कोई धीमा पूछ रहा है तो आप चिल्ला के बोलोगे. Correct? So this also happens. So mirroring you can try, but opposite mirroring, not other than that, shouting, lowering your voice. Okay? Then I already taught you, understand your emotion and then show the emotion. So you have to teach how you. So for example, आप 5-6 emotions के नाम लिख लो and then you write down how you show that emotion. जब आप angry होते हो तो आप कैसे दिखाते हो या उसे टैकल करते हो. आप सैड होते हो तो उसे कैसे टैकल करते हो. आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसकी बात नहीं सुननी, तो आप उसे कैसे टैकल करते हो. Okay, when you know how to tackle your emotions, you can teach it nicely to your students also how to tackle. Okay, so for example, you can teach them, when I'm angry, I start drawing something. तो वो ड्रॉ कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, जब आपको सैड फीलिंग होता है तो आप एक लेटर लिखते हो उस पर्सन को कि आपको क्यों हर्ट फील हो रहा है. ओके, या फिर अपने किसी लव्ड पर्सन को जाके उस इंसिडेंट को बताते हो प्यार से, आराम से, नॉट इन अ कंप्लेनिंग वे. ओके, एंड यू कैन टेल देम व्हाट यू वांट फ्रॉम दैट पर्सन. ओके, द सेम अप्लाइज टू यू. व्हेन यू फील डिसरिस्पेक्टेड, यू कैन क्विकली फील कि ये बच्चे के कारण मुझे कौन सा इमोशन फील हो रहा है एंड व्हाट यू वांट फ्रॉम दैट किड. So you, Swati, close your eyes and feel, अनन्या के कारण मुझे कौन सा इमोशन फील होता है हर बार, और मैं अनन्या से क्या चाहती हूँ कि वो क्या करना शुरू करे.
write it down. You Swati, you think about that boy and you start writing it down. कि मुझे, what's the name of the boy? Unmute. Shriyan. Shriyan. Okay. So you write down Shriyan. Whenever you behave like this, I feel this. Okay. And I want you to, you write down what you want him to. Don't say, I don't want you to run. I don't want you to do. You say that I want you to sit in my class attentively. I want you to feel what I'm teaching. I want you to love what I'm teaching. Positive statements. Okay. And then next time when you meet that kid or that girl, when you meet Jyoti, you can quietly tell her this. Okay, Ananya, don't tell her that you did this is not right, you should always listen. Ananya, whenever you speak to me like this, I feel angry, I feel sad, okay? And I want you to behave like this. Okay? Quietly. Right? So the whole thing is that you are moving yourself from a reactive brain to a creative brain. That's it. And you're just understanding the other person's perspective कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते, दूसरा भी सही है उसके अपने sphere में. Okay, like if husband and wife they have a clash, they both are correct because husband ने ये particular चीज देखी अपनी family में और वो ऐसे बड़ा हुआ है, wife ने एक particular चीज देखी अपनी family में वो ऐसे बड़ी हुई है, तो दोनों सही हैं. Correct? So nobody is right, nobody is wrong. Only thing is how can you settle it well so that you don't disrespect each other. And that also needs to be done with boundary. जब हम उन्हें सिखाते हैं कि ऐसे behave करना है, this is the way which is the best one which I have learned till date. There can be another way also. Okay, there can be another way also which you can teach me. You can tell that girl. Because किसी और के हर एक के पास correct solution नहीं है, वो उसका solution है जो उसके लिए काम करा है ना? मैं जो आपको बता रही हूँ वो मेरे लिए काम करा है, पर ऐसा हो सकता है आपके पास एक दूसरा better solution हो जो आप मुझे next teacher call में बताओ. It's possible. Right? So nobody has complete knowledge of anything. It's only their experiences which are teaching them. Yes? So I'll give you one example. Like in my grammar class, kids come up with new words. Okay? Like noisiness, yeah, repairedness. So I cannot tell them that you're wrong. Because if I tell them that they're wrong, they will next time never say the new word which they've come up with. So they will not say the word, okay? So what I tell them that Daksh, I have not heard this word before. Can you check it up in the dictionary? Simple. ठीक है, इतना बोल देती हूँ क्योंकि मुझे बोलने में बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे भी सारे वर्ड्स नहीं आते डिक्शनरी के, क्या पता कोई वर्ड हो वैसा. So I tell them, Daksh, can you please check in the dictionary if a word like this exists, and if it is, please share in the class. ठीक है, तो वो चेक करते हैं, उनको वर्ड नहीं मिलता. So they quietly come and tell me, ma'am, there is no word like this in the dictionary. So I say, okay, good. So we came to know that this is not a word. Right? Easy. So you don't have to tell them that they are wrong. They can find it for themselves. You just have to show them. Yes. कैसे ढूंढना है अपने आप को. Okay? Right? Great. So ये हो गया. And then I have. So yes. So अभी कोई disrespect करेगा तो हम क्या करेंगे? Balle balle, yes. That this is my area of growth and this student is going to teach me how to become a better teacher. ठीक है, because अच्छे बच्चे तो already अच्छे हैं, उनके साथ तो मैं वैसे ही हूँ जैसा मुझे होना चाहिए, right? Yes, great. So can we move to the next one? If you have some action steps for this, how to treat disrespectful students, misbehaved students, okay, students who are not listening to you, right? You will use a calm tone. You will teach them how to express their emotions. You will teach them these two things and simplify the instructions. That's all. These three things you can try. Okay. And then whenever you say you should do this, you should, what will you think about the should? You can choose to do this. Replace should by choose to. Okay. कोई भी should बोलता है ना, आप समझ लेना कि इसका belief system कितना strong है, क्योंकि वो should use कर रहा है, उसकी duty है, ठीक है? So that's the signal which. So what we'll do, it is already 8:40. So we have just discussed
एक किया है मैंने, 4 करे थे आज के, मैं 4 प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में, हमारा एक ही इतना बड़ा हो गया, इतना सारा टाइम हो गया। So let's take let's wrap this up, okay? Because I Yes, also yes, have yes. some other commitments, and tomorrow is Karwa Chauth, so everything is happening together. Yes, yes, So okay. yeah, so the next one which I had in line was students who are not bringing their materials to class. बहुत भूल जाते हैं ना, प्रोजेक्ट वर्क नहीं करके आ रहे, पेंसिल भूल गए, so because of that also our energy gets drained. So इसको हम लोग next teacher call में tackle करेंगे, okay? Yes, And then we have yes. parents who are not support. Yes, Swati? Okay. Just ma'am, you finish it. I just have one more query. So Okay, I'll okay, tell sure, that. sure. And then we will deal about parents who are not supporting you, because a teacher is not alone in this journey, right? They need parents support also. So how to Yes. build the parent support, we'll do in the next call. Hopefully हम 2 कर पाएंगे. Let's see if we can do Yes, that. yes, yes, Yeah, definitely. yes, Swati, Yeah. बताइए. One more, एक minute. Excuse Yes, me. Jyoti. Shall I leave the class because I Yeah, have sure, to why do some not? Sure, meeting. sure. Yeah, yeah. Okay. Okay, Thank you so much. bye. Yeah, Welcome, yeah. Jyoti. Bye. Yeah, bye. Yes, Swati. Ma'am, I have few kids in my class. Like they roam around. They don't sit in one place. Like we have a 3.5 hour batch, but 2 3 kids are there that they want to talk to some other children. They go to some other table and they chit chat with them. So how to handle them, that they have to sit when the work is going on or whenever something is Okay. going on? How to grab their attention? 2, 3 kids, right? Yes, 2 3 kids are there. They will be like, one is this Shriyan, which I told you. He moves around, and because of him, these few kids are like, we can move around in class. He is also going, so they might be following. I don't know what is the reason, but yes, they are there. Okay. So do you make them sit apart, or they 3 of them sit together? No, ma'am, they are in different tables. One girl is there. There are three, 2 girls and 1 boy. They are in the same bus. So they all 3 were sitting on the same table and they were continuously talking. Even whatever is given, like writing work, they will be talking. And because of that, their writing speed will be, means they will not finish their work on time. That Correct, was correct. happening. So I have made them sit separately on all the 3 tables. We have total 6 tables. And in one table, we have 7 kids sitting, 6 to 7 kids sitting. So I have made them sit separately. So what that girl will do, she will go to that other girl and she will be talking, otherwise playing with the handkerchief, ye hai, wo hai, XYZ. They have 100 of things to talk. So that happens. And one boy is there. He also is like that. Teacher ye, teacher wo. He will be roaming in the class. So there are these few kids. Okay. Swati, so what is the feedback which I'm getting about your classes? They don't understand the rules. 1. Okay. Maybe you have simplified the rules, but they don't understand the rules. 1. Second, they don't feel the importance of following the rule. They don't know the importance. कि rule follow करने से उनको क्या फायदा होगा. Okay. So one is you have to build investment. Investment matlab your students should feel pride in following the rules of the class. That pride they should feel. And once they start feeling that pride and the benefit which they get out of following the rules will be helpful. So what is the benefit of following rules in your class, Swati? Ma'am, I told that we don't give them stars or smileys like in other schools. We have that appreciation, verbal appreciation, that fantastic, thumbs up, good job, well done. All those verbal appreciations we follow, fantastic, like that, thumbs up, we show them for a good behavior that way. So maybe they are So not only those impressed things with I that verbal. follow, They are not impressed with that maybe. verbal. Okay. Do you feel all other kids are impressed with this verbal thing? Ma'am, a few kids are so happy if I give them thumbs up, well done, good job, if they are doing it, writing it nicely, if they're following. So they are, but I don't know, like 2 3 kids, these are there, they are just not bothered. Okay, so what I feel, Swati, one thing is you can create a team of these 3 versus the whole class. One thought. Okay. And now only 2 teams are there. One whole class and one this team. You can call it you can give it a special name, which makes them feel special. The trio or whatever. Okay.
Now you have to tell them that, see, these are the special rules which you have. You can create some special rules for them. How can you minimize your expectation from them? How can you minimize? आपके क्या expectations है सोचो, और उसको छोटा कैसे कर सकते हो, ठीक है? और अगर वो छोटा सा भी उन्होंने फॉलो किया है, I want you to teach the whole class, to all of them, show them a thumbs up. Yay, well done, trio. So maybe it's the appreciation not coming from you, but coming from the set of kids who are sitting with them, जिनके आंखों में उनका respect बढ़ेगा. Because see, the way you respond to these three is the way the class also mirrors your response towards them, ना, है ना? उन लोगों के भी मन में एक इमेज है उन तीनों बच्चों की, तो उस इमेज को हमें बढ़ाना है. वन, ऐसा कर सकते हैं. सेकेंड, आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपके एक्सपेक्टेशंस है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दो, या ऐसा काम दो उनको जो उनके लिए इतना इजी हो फॉलो करना कि वो आपको मना नहीं कर पाए. ऐसा सोचो. सो मेक देम विनर्स फॉर फ्यू डेज, छोटे छोटे कामों में. ओके, सो तीनों जने एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. अगर ये इधर मूव करेगा तो आप उसे वापस बुला के बिठा लेना, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को एक स्पेशल टॉकिंग टाइम दूंगी, जब आप पूरे डेस्क में घूमोगे और सबको चेक करोगे कि सब लोग काम कर रहे हैं कि नहीं. तो गिव देम व्हाट दे वांट, बट गिव इट टू देम ओनली व्हेन दे फॉलो सर्टेन थिंग्स व्हिच यू टेल देम टू. ओके, उनको वही दो जो उन्हें खाना है, पर थोड़ी देर बाद दो. दैट्स ऑल. इसको फॉलो करके देखो, एंड देन टेल मी इफ इट्स वर्किंग इन योर क्लास. देन वील वर्क ऑन इट कि क्या कर सकते हैं. और बट हैव फेथ. और ऐसा नहीं कि हाँ यार ये तो मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं. जो भी मैंने आपको बताया उसको फ्रेश स्टार्ट की तरह फॉलो करो, बिकॉज नाउ यू आर कमिंग हियर फॉर सॉल्यूशंस. योर माइंड इज ओपन, यू आर इन क्रिएटिव मोड. सो वट एवर यू डू इन योर क्रिएटिव मोड विल स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज यू बिलीव इन इट. ठीक है? अगर ऐसा भी हो सकता है पहले काम नहीं किया रहेगा पर अभी काम करने लगेगा, क्योंकि आप करना चाहते हो उसे काम. वर्क ऑलवेज वर्क्स. ठीक है? So just Even start ma'am, working. Shriyan, what happens? Shriyan. Yes, ma'am, definitely. And Shriyan also, ma'am, if we tell him politely, if we tell him in a friendly manner, he will follow everything. But then he sits on our head. He will do whatever he wants. Sometimes that happens. Correct, correct. Yeah, so you need to draw that line. So you will be polite, but that doesn't mean that he will climb on your head. He needs to be on the ground with everyone. But a special thing can be given to him so that he starts listening to you. और जब उसे वो अपने अपने winning देखने लगेगा ना अपने आप का, so he will come in that league of other kids. When he will see himself winning. अभी वो इतना पीछे है कि उसको वो बहुत डिफिकल्ट लगता है वो बाकियों के जैसा कैसे बन सकता है. वो ये वाला स्टैंडर्ड है ना, कभी कभी हमारे से इतना ज्यादा अच्छा कोई कर रहा होता है कि हम उसके जैसा बनने की कोशिश करना चाहते हैं पर हम करते नहीं है, इस डर से कि हम वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे. ऐसा भी होता है. ओके, And what happens, ma'am, उसको अगर जो चाहिए वो नहीं मिला ना, he will immediately start fighting. Like ऐसे मारा मारी पे आ जाएगा. ऐसा है उसका कि ये मेरा पेंसिल लिया उसने, ये किया. He has that, I don't know. So no. So again, that's a feedback how that he doesn't know how to tackle his emotions. So you need to teach him कि अगर तुम्हारी बात कोई नहीं माने, what are the 3 things you can do? You have to teach him, Swati. You have some extra work with this child. You have to teach him कि अगर तुम्हारे से कोई पेंसिल ले ले, these are the 1, number 2, number 3 things which you can do, so that he gets comfort and solution in that. Okay, so like my kid, he gets hit by everyone in the school. He gets hit by everyone. My kid, he's in class 4. So what happens is because he cries and then comes to me and says कि ऐसा हो गया क्लास के अंदर. Now what is my job as a mother? मैंने उसको सबसे पहले ये सिखाया कि तुम्हें जब वो मारे तो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि कभी कभी बच्चे को नहीं समझ में आता उसे क्या करना है. तो मैंने उससे बुलवाया वो डायलॉग बार बार कि तुम्हें ऐसे बोलना है, इसको जोर से बोलो, इसको गुस्से से बोलो, या जोर से हेल्प मी चिल्लाओ. तो आपको ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा उस बच्चे को. ठीक है? तो पहला इमोशन टैकल करो जो आपको सबसे ज्यादा उसके अंदर दिखता हो, उस इमोशन को टैकल करो. और धीरे धीरे जब वो अपने इमोशंस को समझने लगेगा तो वो उसे अपने पेरेंट्स के साथ जाके भी फॉलो करेगा, एंड दैट विल बी योर विक्ट्री. इन बच्चों के साथ पहले इंसान बनाना जरूरी है. पढ़ाई तो होती रहेगी, राइट? Yes. He is very smart in studies, ma'am. Yeah, that's what. So he doesn't need you for studies. He needs you for his personal development, right? Yes. Great. Okay, Swati. So that's all. We'll just call it a day. Welcome.
Yeah. Thank Bye. you. Bye.